So I was saying that this website is available. I'll just run you through the basics of what you need to understand in terms of the entire data spectrum. Okay. So I talked about, मतलब I told you what is you need to understand what are databases. Databases में data store कैसे किया जाता है, उसमें से data retrieve कैसे किया जाता है. So there's a concept called primary key and foreign key. Primary key is nothing but जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक कस्टमर हो फॉर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो कंपनी एक यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई करती है. इट कैन बी योर मोबाइल नंबर, इट कैन बी योर ईमेल आईडी, or it can be a unique ID that they have created for you. Then you need to understand what is cardinality and entity relationship. This is basically how multiple tables or multiple tables inside a database are connected to each other, because all the data will not be stored in a single table. Why? Because there is a concept called normalization that says that you will break down data into the lowest level of granularity that you can, okay, to improve the integrity of the data and to store data at a higher quality. इसका I will share a very nice video with all of you. तो आप लोग वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. You might need to watch it 2 or 3 times, but you will get the hang of it. Then what is OLAP? What is online analytical processing versus online transaction processing? Okay, you need to understand how data is processed in the databases where it is stored. Then what are databases? What is the data warehouse and what is the data lake? Cloud versus on-premise क्या होता है? ETL क्या होता है? Excel में there is a tool called Power Query that is used. That is an ETL tool, which is extract, transform, and load the data. Then there is data modeling, connecting multiple data sources together. Then obviously Excel is something that we're doing. See, Excel is a part of the entire spectrum, but it's not the only tool. Remember, Excel में we'll be doing pivot tables, data cleaning थोड़ा सा हमने किया हुआ है, condition formatting we'll do, data validation we'll do today, and creating an interactive dashboard and all we can do using pivot tables. So we'll do that when we do pivot tables. SQL आपको सीखना जरूरी है क्योंकि अब now when you say you're learning Excel, it is not just Excel that you're learning, because I can just show you. थोड़ा सा I'm going to be spending time on this because this is also important along with learning Excel. So SQL में there is a command called group by. Okay. Now Excel also has a function called group by. The way both of these work is exactly the way both of these functions work in SQL and in Excel is exactly the same from a logic perspective. Syntax is a little different. Excel में क्या फॉर्मूला की तरह लिख रहे हो, group by में आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, SQL में आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं essentially. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है. फिर जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जॉइंट्स का. इट इज सेम इन SQL, इट इज द सेम इन Power Query, और एक्सेल में भी एक तरीके का जॉइन होता है जो है VLOOKUP. We maybe do that in next session. So again, once you understand these concepts, you're not just learning it for Excel. It is a concept that is generally applicable everywhere in the data landscape. CTs and all is a little advanced in SQL only. May you want to go into deep, you can go. But again, the point is you need to have a high level understanding of what the entire data landscape is. Then finally आप data gathering, cleaning के बाद आप आते हो BI tool पे, जहाँ पे you want to visualize and analyze data. उसमें भी then there is a separate language that you have to learn. जैसे Power BI में there is DAX, Tableau में there is a different language. How do you connect data from multiple data sources? Then once you're thorough with all of that, then you move towards how do you create visualizations? What are the best kind of visualizations to show complex data? Then there is sharing and collaboration. Then once you have a high level understanding of this, then you move towards Python and then data science, all of this, अगर आपका interest है. But the idea is कि आपको high level understanding होना चाहिए. Please don't let anyone in. आपको एक high level understanding होना चाहिए इन सब चीजों. तो ये आर्टिकल मैं यहाँ भेज देता हूँ चैट पे, वो है ना, आप में से ग्रुप पे डाल देना इसको. You should definitely go back and read. Then each concept you can deep dive. पहले इसको पढ़िए, फिर हर कॉन्सेप्ट पे आप अलग से डीप डाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको भेज दिया, और मैं आपको और एक भेज देता हूँ वीडियो. ये जब हम एक्सेल में काम करते हैं ना जनरली, जैसे मैं कॉर्पोरेट में जब पढ़ाता हूँ, जिन लोगों ने सिर्फ एक्सेल में काम किया ना, उनको ये सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, क्योंकि दे नेवर कम अक्रॉस दिस. बट इफ यू आर समवन स्टार्टिंग आउट एंड इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज टूल्स, ये भी है ना, कोई ग्रुप पे डाल देना प्लीज.
If you have a good understanding of all of these concepts, it will only make you a better analyst at the end of it. That was that what I wanted to share with you. अब आते हैं, हाँ मैं आपको दिखा रहा था ग्रुप बाय। तो एक्सेल में एक फंक्शन है नाउ ग्रुप बाय, दैट वर्क एग्जैक्टली लाइक हाउ यू वुड थिंक इट वर्क्स एसक्यूएल में। अगर आप में से किसी ने एसक्यूएल किया है तो मैं जनरली एक आइडिया दे देता हूँ। मुझे मेरे रो फील्ड चूज करनी होती है, फिर मैं मेरी वैल्यूज फील्ड चूज करूंगा, मैं सम फंक्शन डिफाइन करूंगा and I'll say if I want my headers or not. Show grand totals and subtotals. I can have it sorted in the descending order. This is a function in Excel called group by. आपके वर्जन में शायद ये अभी नहीं आया होगा. I don't know if it is applicable to the general audience. अभी data users के पास होगा. But the idea is whatever you're learning in Excel. जैसे अभी हम data validation करेंगे. You can open the file which is 2.2. 2.2 आपने डाउनलोड किया था, उसको ओपन कर लीजिए. You can open the PowerPoint as well साथ में. So data validation is nothing but does anyone of you know what data validation is? Not in Excel. Generally, भी अगर आप मुझे data validation का definition बता सकते that would be okay. Anyone? You can unmute. I cannot go back to the Chrome browser now. You'll have to unmute and answer. Doesn't matter if it's correct or wrong. You can answer. Anyone? Is data validation like by speaking about VLOOKUP? नहीं. In Excel, we use data validation to select from a list that we a predefined list. We select and create a drop down in Excel cells. Perfect. That is one use case of a data validation. One usage. List बना सकते. Absolutely correct. What is the It's name by the way? kinda constraints. Providing constraints. Providing what? Constraints. Can you elaborate a bit? Like we have some fixed amount of list and we have to select from it. ठीक है. Redefining what the user can choose. Absolutely correct. जिसने लिस्ट बोला था उसका आपका नाम क्या है? Kashif. Mohammad Kashif Naseem. ठीक है. So data validation is basically nothing but restricting the user to select from what you define. It can be in terms of a list, it can be in terms of value. For example, जब मैंने आपको गूगल फॉर्म भेजा था at the start of this session, जब आपको उसमें आपका एज डालना था, उसमें आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, टेक्स्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि मैंने उसको वैसे प्रीडिफाइन किया हुआ है. इस फील्ड में आई कैन कलेक्ट ओनली certain type of information, certain type of data, and the user will not be able to put anything else. The whole point of a data validation is that it allows you to have control on the data that is coming in, right? For example, anytime you're booking a train ticket, a bus ticket, or plane ticket, आपको एक यूनिक कोड मिलता है. आप रेड बस पे जाओगे, आप IRCTC या मेक माई ट्रिप पे जाओगे, जब आप सर्च करते हो कि or you want to do when you're searching for that PNR of the transportation, whatever mode you're using, जैसे विस्तारा पे फॉर एग्जांपल on any website when you web checking, आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस टाइप का फ्लाइट ले रहे हैं. ठीक है. When you're doing a web check-in, so all of these are examples of data validation. Because as a user, I cannot choose anything apart from economy, premium economy, and business, right? If the website allowed me to choose something else, then there would be havoc. क्योंकि डेटा कभी सही नहीं होता. अगर मैं वहाँ एक नोट भी डाल देता यूजर्स के लिए कि यहाँ ना इकोनॉमी लिखिए या प्रीमियम इकोनॉमी लिखिए या बिजनेस लिखिए. There are 10 different ways that users can write economy. कोई लिख सकता है ECO, कोई लिख सकता है E with a lower case, कोई लिख सकता है E with an upper case, कोई पहले स्पेस डाल देगा गलती से, कोई बाद में स्पेस डाल देगा, कोई सेंटेंस लिख देगा. So you have to define what kind of information you want from the users, and you have to restrict the users to input specific type of information. That is how you maintain good data quality. Okay? Excel में data validation का काम क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको. तो अगर आप बेसिक्स वाली शीट पे देखिए, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, फिर आप लोग कर लेना. So in the data tab, I have this option called data validation. Data tools group में I have this option called data validation. Okay? तो यहाँ पे what I can do basically is
I have a bunch of options, right? These are validations. Validation is nothing but checks that I'm restricting the user from putting in anything that he wants. Only specifics or only criteria that I define can be chosen or can be inputted by the user, nothing else. तो इसमें बहुत सारे criteria होते हैं जो आप define कर सकते हो in terms of validation. For example, if I say whole number, right? Now, when I am applying a data validation on cell A2, where I'm saying that the type of validation is I only want to allow whole numbers, then when it comes to numbers, I have a lot of options. Okay, I want to allow the user to put a number between certain numbers, not between, equal to, greater than, less than, phala phala. If I say less than, okay, and if I say 5, I say okay, and the user will now be able to put anything because I have not put in a lock. So abhi, since I have only defined my criteria, but I have not made it rigid. What I mean by that is जब आप कोई भी criteria लगाते हो data validation box में जाकर, तो आपको अच्छा नहीं, it's correct ना, less than 5 लगाया मैंने. So if I put a number greater than 5, the cell will not accept it because it will say that this value does not match the data validation restrictions defined for the cell. If I put anything less than 5, it will accept. If I put 5, it will not accept because I have said less than 5 not equal to 5. So the Excel में specifically, now इसका use case क्या है? Excel में बहुत बार at various organizations I've seen, not at one, countless organizations, बहुत बार data is collected from the ground. And a lot of times people are saying कि you know हम तो वहाँ बोल देते हैं, हम तो मेल कर देते हैं कि आप इसी तरीके से डेटा भरिए, आप यही वाला सेल में आप जाके लिखिए, आप अगर नंबर लिखना है तो आप डेसिमल ही डाल, डेसिमल मत डालिए, आप सिर्फ होल नंबर डालिए, वॉट एवर द काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन कैन बी. तो when you restrict the user from putting in the data validation, when you from putting in any value that you want, सबसे पहले तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आपको जिस तरीके का डेटा चाहिए, जिस क्वालिटी का और जिस एक्यूरेसी का डेटा चाहिए वो आप कलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है. सेकेंडली, the user will not be able to put anything else. That is the biggest advantage, right? In terms of decimal number, again same चीज है. मैं अगर any value में जाके चूज करूंगा decimal, इससे मैं कर देता हूँ greater than, वैसे greater than 1, ठीक है, वैसे greater than 1, तो यहाँ पे मैं 1 तो लिख नहीं पाऊंगा कि I have to define decimal. I can say 1.1, it will accept it, but if I say 0.5, it will not accept it. Data validation का पूरा point ये है, repeating what I said, you restrict the user from putting whatever they want to ensure that you have specified the criteria beforehand before collecting the data. Similarly, अगर आप date का validation लगाओगे, तो user will be able to put only a specific date. आप time का validation लगाओगे तो user will be only allowed to put a specific time, less than, greater than, between, उस तरीके से. ये है basics of data validation, ठीक है, जो general options Excel आपको offer करता है. The other is, one is called a list. Data validation में मैं एक list भी create कर सकता हूँ. For example, अगर मैं A2 में एक list बनाना चाहता हूँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको इस पावर पॉइंट में दिखाया था स्क्रीनशॉट में, से अलग अलग वेबसाइट्स पे होता है, फॉर्म्स में होता है, जब आप भरते हो फॉर्म्स. तो अगर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, आई हैव टू क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन अगेन. मैं यहाँ पे लिस्ट चूज करूंगा. अब लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं एक्सेल में. एक है मैं मैनुअली कॉमा सेपरेटेड डाल सकता हूँ कि मुझे क्या लिस्ट चाहिए, से आई जस्ट पुट इन रैंडम वैल्यूज लाइक दिस and I press OK. Now when the user clicks here, he will only be able to choose from these values. If the user puts anything else, it will not be accepted. If the user puts anything else, it will not be accepted. If the user puts anything else, it will not be accepted. I can either click on the drop down, the user can click on the drop down or type in what they want. If it is matching the criteria, the cell will accept it, otherwise the cell will reject that input. Then one is I can do a selection from cells. यानी मैं मेरी लिस्ट हार्ड कोड करने की जगह, उस डेटा वैलिडेशन बॉक्स में मेरी लिस्ट हार्ड कोड करने की जगह मैं लिस्ट का एक सोर्स डिफाइन कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, यहीं पे कॉलम ई में मैंने मेरा एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ. सो आई हैव द सोर्स अवेलेबल विथ मी. आई कैन सिलेक्ट दिस सोर्स. तो यहाँ पे आप देखोगे E2 से E6 आता है. एंड व्हेन यू सिलेक्ट द सोर्स इन डेटा वैलिडेशन, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती है. सो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के इफ यू ड्रैग द डेटा वैलिडेशन डाउन, वो लिस्ट चेंज होगा. सोर्स फ्रीज हो जाता है तो सोर्स हमेशा उसी को रेफर करेगा E2 से E6 के वैल्यू से. एंड द आइडिया हियर इज दैट नाउ the user can choose from any of these values. If tomorrow the list gets updated, the data validation also gets updated. मैनुअली करने में यह है कि आपको उसमें जाना पड़ेगा सेल पे, फिर यहाँ आके आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया. इट्स वन फर्दर स्टेप. अगर आप कहीं एक्सेल में उसको स्टोर करोगे कोई हिडन शीट में, तो आपको इस तरीके से डेटा मिलेगा.
डायरेक्टली फ्रॉम द सेट। ठीक है, एक बार बेसिक और लिस्ट ये दो शीट आप देख लीजिए, वेरी सिंपल एग्जांपल्स। इफ यू वांट मी टू रिपीट समथिंग लेट मी नो, बट जस्ट हैव अ लुक एट दीज टू, आप ट्राई कीजिए। इफ यू नॉट एबल टू डू इट लेट मी नो, then I want to cover something a little more advanced, which is applying data validation using formulas, applying a data validation using formulas। और मैं आपको एक रियल केस स्टडी भी दिखा दूंगा, which I had solved for someone at Landmark। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि डेटा वैलिडेशन का रेलेवेंस कहाँ आता है। बेसिक्स और लिस्ट ये दो शीट आप कवर कीजिए, एक बार देख लीजिए, ट्राई टू अप्लाई द डेटा वैलिडेशन। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया प्लीज पूछिए। अगेन पावर पॉइंट में हर एक एग्जाम्पल है, कैसे लगाना है डेटा वैलिडेशन, क्या करना है एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन द पावर पॉइंट। एडिशनल नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। नाउ रिमेंबर इन द ओल्डर वर्जन्स, प्लीज जस्ट 2 moments on my screen, in the older versions of Excel, if I had duplicate values here, से मेरे पास अगर 3 times f लिखा होता है और d और e लिखा होता है, तो मेरे डेटा वैलिडेशन में ना f एक ही बार आएगा। ठीक है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट had updated this data validation feature, तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज देता था, डुप्लीकेट्स नहीं दिखाता था। इन सम ऑफ द ओल्डर वर्जन्स आपको शायद डुप्लीकेट्स दिखाएगा। ठीक है, तो आपको पहले एक डुप्लीकेट एक यूनिक लिस्ट बनाना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप या तो डिस्टिंक्ट यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था यूनिक फंक्शन, या फिर आप इस लिस्ट को कहीं कॉपी कर लीजिए और डेटा वैलिडेशन के जस्ट ऊपर जो होता है रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है, आप वहां से रिमूव डुप्लीकेट्स करके आप उस लिस्ट को फिर अपना सोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा इफ यू आर एन ओल्डर वर्जन, आई डोंट रिमेंबर व्हिच वर्जन दे पुट दिस अपडेट इन, but if you just have a bunch of duplicate values, and if you're seeing the duplicate values again and again, which means you will have to first create a separate list that only has distinct values, and then go ahead and create your data validation. Just have a look at this. I'll just check the chat in the meanwhile. Please look at basic and list, ये तो देख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल्स कराऊँ। Having done the same guy, एक सेकंड डिनाई मत करना अभी, एक सेकंड, किसी ने ग्रुप में मैसेज किया था, वो है एहतशाम अफजल, ये नहीं है वो। अगर एहतशाम अफजल आएगा ना तो उसको लेट इन कर देना। ठीक है, Okay, sir. now let's come to rules. See, इसमें ना there is nothing much for me to tell you in terms of list। ठीक है, there are different examples that I can show you जब भी हम आगे करेंगे। ठीक है, from a case study perspective, but basically data validation इतना ही है इसमें। आप होल नंबर का डेटा वैलिडेशन रख सकते हो, डेसिमल, डेट, टाइम, या फिर आप लिस्ट बना सकते हो, या फिर आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। Now come to the sheet called rules and come back on my screen. Come to the sheet called rules and come back to my screen. Now, if I have to apply data validation,
बेसिस ऑफ फॉर्मूला, बेसिस स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे मुझे चेक करना है कि इस सेल में जो नंबर इनपुट होगा दैट शुड ओनली बी 10 कैरेक्टर्स, दैट शुड ओनली बी 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ द वन चैलेंज विद डेटा वैलिडेशन इज, जब आप सेल को चूज करते हो और आप डेटा वैलिडेशन पे जाते हो और आप यहाँ से कस्टम चूज करते हो, ठीक है, कस्टम चूज करते हो तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ पे ना फॉर्मूला का आर्ग्यूमेंट नहीं लिखाता। So we generally advise that you write the formula in the cell outside, copy it, and then take it there. So if I have to check if cell A2 should only have a number that only is 10 characters, so I'll have to apply a function called len, where I'm saying that the length of A2 should be equal to 10. तो मुझे true या false बताएगा. Now when I add a number, it says it is true. And I also want to check, I'll just remove that number. Right now it is false because the cell is empty. And I also want to check that, मैं इसको and में डाल देता हूँ, ये वैल्यू लिख सकते हैं। जो भी इनपुट है इसका, put in and, एक and कंडीशन लिख लेते हैं, wherein I say that इस नंबर का तो मैंने दो फंक्शन यूज किए हैं। पहला फंक्शन है लेंथ, ठीक है, जो चेक कर रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ सेल A2 इज इक्वल टू 10 और नॉट, अगर 10 से कम है तो फॉल्स दिखाएगा। दूसरा फंक्शन है इस नंबर जो मैंने लेंथ के बाहर रैप किया, दैट इज चेकिंग इफ द नंबर दैट इज सप्लाइड in the cell A2, number that is supplied in the cell A2 is a number or not. So is number basically क्या करता है, अगर if I have a number here and I say is number, ऐसे is number, तो मुझे बस true या false दिखा देगा। If I put in A here, it will show me false. इस नंबर का काम यही है। तो अगर हम सिर्फ पहले सिर्फ लेंथ का चेक करें बिना वैल्यू डिफाइन किए, अगर मैं बिना वैल्यू डिफाइन किए सिर्फ लेंथ चेक करना चाहता हूँ तो मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मैंने जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, बिकॉज डेटा वैलिडेशन मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं दिखाता है, लेंथ बड़ा छोटा फंक्शन है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स इफ कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो उस केस में आपको एडवाइजेबल है दैट यू राइट द फॉर्मूला इन द सेल, देन गो बैक एंड पुट इट इन द डेटा वैलिडेशन बॉक्स। So I'll come to A2, I'll come to data validation and I'll come to the allow drop down here and I will say custom and I'll say that this is my formula equal to len A2 is equal to 10. I'll press OK. अभी ये false दिखाएगा. Now if I put in a number which is exactly 10 characters, it will accept it. If I put in a number which is exactly 10 characters, it will accept it. Anything less will not be accepted. Anything less will not be accepted. So data validation में आप अपने कस्टम फॉर्मेट्स भी या कस्टम फंक्शंस या कस्टम आर्ग्यूमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने कस्टम आर्ग्यूमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इन डेटा वैलिडेशन यू कैन डिफाइन योर ओन कस्टम आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। So I say 9.0, it will not accept that as well because मैंने बोला the entire length should be 10. And if I have a number like this in a cell, if I have a number like this in a cell, and if I take out the length of that number, it's going to be 0.1, let's say. तो अगर मैं डेसिमल डालता हूँ तो लेंथ बढ़ जाएगा बिकॉज डेसिमल को भी एज अ कैरेक्टर वो काउंट करेगा, डेसिमल को भी एज अ कैरेक्टर वो काउंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वन दैट यू कैन एज एन एग्जांपल दैट यू कैन लुक एट, ठीक है। द अदर इज दैट यू वांट टू चेक इफ द वैल्यू इन A6 यहाँ पे, if that value is of 10 digits, the number is 10 digits and it is starting with 9. So number 10 digits का ये चेक करने के लिए तो मुझे सिर्फ लेंथ का सेम फॉर्मूला यूज करना है, तो द लेंथ शुड बी इक्वल टू 10। और मुझे ये भी चेक करना है कि दूसरा जो आर्गुमेंट में लिखूंगा, आई से दैट सिंस मुझे चेक करना है कि द नंबर स्टार्ट्स विद 9, तो मुझे लेफ्ट से फर्स्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं करूंगा लेफ्ट ऑफ A6 शुड बी इक्वल टू 9, लेफ्ट ऑफ A6 शुड बी इक्वल टू 9। अब सिंस ये दो सेपरेट कंडीशंस हैं, सिंस ये दो सेपरेट कंडीशंस हैं, मुझे इनको एंड के अंदर डालना पड़ेगा बिकॉज आई वांट बोथ ऑफ दीस कंडीशंस टू बी, because I want both of these conditions to be true. So if I say, now if I say, right, if I say this, it's going to be false, but if the number starts with a 9, it's going to be with the number starts with 9, it's going to be true. Now the issue with any text formula is, remember, जब आप कोई text formula use करते हो तो उसका जो output होता है ना,
उसका जो आउटपुट होता है वो टेक्स्ट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू लेफ्ट ऑफ दिस, पहला कैरेक्टर आ जाएगा। अब मैं अगर चेक करता हूँ कि ये जो 1 आया है ये नंबर है या नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज किसी भी टेक्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी अ, किसी भी टेक्स्ट फंक्शन का जो आउटपुट है दैट इज गोइंग टू बी अ टेक्स्ट ओनली। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू इंश्योर, अभी मैंने डबल कोट्स में डाल दिया तो ये टेक्स्ट हो गया है। अब मैंने जब डबल कोट्स में डाल दिया है सो इट इज कंसिडर्ड एज टेक्स्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि वो नंबर हो, अगर मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि वो नंबर हो, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं उसको वैल्यू आर्ग्यूमेंट में डाल के left of a6 should be equal to 9 and I can wrap this entire thing inside a value। तो जो लेफ्ट का आउटपुट आएगा, लेफ्ट का जो आउटपुट आएगा जो इस केस में 9 होगा, sorry, one second, this should work। So I'm saying basically that I'm using an AND condition. They're saying that left of a6 should be equal to just say text 9 if I use this in the data validation. So now if I want to apply the data validation, I'll just delete the number for now. I'll come back and here again, I'll say I want to create a custom formula. Okay. Remember for text length, अगर आपको कोई जैसे a lot of times what happens is you want to capture product ID, vendor codes and all of those. तो text length आप manually define कर सकते हैं, number length के लिए कुछ define करने के लिए है manually. And if I come back and I write a number here, it is not going to accept it. Right? But if I put in another number, it's still not going to accept. But if it starts with a 9, it will accept it. If it starts with a 9, it is going to accept it. If it starts with a 9, it is going to accept it. Again, now you would ask why am I showing you a specific example? Number length is something that we tend to capture in terms of capturing mobile numbers, okay? In terms of capturing employee codes, in terms of capturing the student ID. Character का length जो होता है, जो ID का length होता है वो same होता है for across the organization for all the employees. Okay? Now, if you want to check that the number or the value that is there in cell A10 now is of 10 digits starting with 9 and it should be a number as well. तो अभी यहाँ पे हमने ये नहीं चेक किया कि वो नंबर है या नहीं। तो अगर मैं अभी इसको इस नंबर यूज करूँ, अगर मैं इस नंबर फंक्शन यूज करूँ तो ये होगा true in this case, right? It is going to be true in this case, but I have not checked in my condition. I have not specified in my condition that the value being put should be a number or not. That is not data validation that I have applied. That is not a validation that I have applied. Now, if I want to apply a validation where I'm saying that it should be 10 digits, it should start with a 9. So वही left आप करोगे A10 का, then you will do a length to identify if it is 10 characters or not. And finally, you will check if whether it is a number or not, whether it is a number or not. So you can say, यहाँ पे you can say and, you will check if this is a number. Okay. Then you can check if left of this value is equal to 9. Okay. And you can also check whether the length of the value in A10 is equal to 10. Right now it is going to be false because I have an empty cell here. But the moment I put in a number here, it's going to accept it. But right now, since I specified that the first character should be 9, it is coming a false. If I simply change that, it's going to become a true. It is going to become a true. फिर आप इसी सेम कंडीशन को जाके डेटा वैलिडेशन के सेल में कॉपी करोगे। So come to data, come to data validation, come to list, and then in your source you can paste that. This source must be, sorry, not list, my bad, custom, and it will accept that as a formula. यहाँ पे आप और कुछ डालने की कोशिश करोगे, so it will, what is an error in this? 1 second, just check this number. So जो left वाला argument है ना, आपको उसको इस तरीके से लिखना है, that you have to first take out the value, first character का जो, अगर मैं left 8 और 1 करूंगा, तो it should be equal to 9 in this case. फिर उसको आपको value में wrap करना है, उसको आपको value argument के अंदर wrap करना है. I'll just break into different lines.
तो मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि जो वैल्यू A10 में है वो नंबर है या नहीं है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ सेकंड आर्गुमेंट में कि जो फर्स्ट वैल्यू है सेल का लेफ्ट से फर्स्ट वैल्यू है, वो जो भी आउटपुट आएगा मैं उसको, बिकॉज लेफ्ट का हमेशा आउटपुट क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप, तो उसको मैं वैल्यू फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ। वैल्यू फंक्शन डज नथिंग बट कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट इनटू अ नंबर। और लास्ट में मैं चेक कर रहा हूँ दैट द लेंथ शुड बी इक्वल टू 10 कैरेक्टर्स। द लेंथ शुड बी इक्वल टू 10 कैरेक्टर्स। इफ here now I don't have anything, I only have one character, will be false. If I even have 10 characters here now, then if I have 10 characters here now or 10 numbers here, it is going to be true in this case. It is going to be true in this case. Okay, I have to write equal to 9 also. I have to clear the data validation to apply the formula again. तो data validation clear करने के लिए आपको क्या करना है, data validation drop down पे जाना है, फिर से यहाँ पे जिस सेल पे आपने data validation लगाया उसको चूज करना है, and then you can simply click on clear all. You can simply click on clear all. You simply click on clear all. So here what I also want to check is that जो output आ रहा है that should be equal to 9. Output that is coming from this should be equal to 9. This can be in double quotes. Second, so I'm saying is number. I'm saying left of this should be equal to 9. I'm wrapping that in a value. I think this is resulting in an error. Just take this out for a second. It's going to give me a result. I just want to wrap this inside a value function. We can even leave it at this and just display the formula here. I'll just just expand it a bit so that you can see the formulas. I'll break this also into multiple lines. So Alt W, and so the solutions that I've given might be a little different than what is here, right? But the idea is that any custom function, any custom validation that you can think of, आपको यूजर को किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, वो आप डेटा वैलिडेशन में डिफाइन कर सकते हो. You can either depend on what is already available with you, which is whole number, decimal number, date या time, or you can also create a list. या फिर अगर आपको आपके खुद के रूल्स बनाने हैं तो आप आपके खुद के रूल्स भी बना सकते हो. You can have a look at these three examples. You can have a look at these three examples. Let me know if you have any questions. If you have any questions, let me know. Check the chat. So the idea is that you write a formula in a cell first, and then you go and put it in data validation, because data validation, the chances of making an error are higher because it does not prompt you to close the parentheses or put a comma. It does not show you the arguments for a formula as well. It does not show you the arguments for a formula as well. Let me know if you have any questions. I'll show you one more example where you can create a dependent drop-down list. You can create a dependent drop-down list. मैं वो landmark वाली file भी open कर देता हूँ. I'll show you that as well. Any questions, anyone? See, like I said, the concept of data validation is not very complex as such. आप जो as a administrator define करना चाहते हो in the condition, you can define whatever you want, okay? And you can also use GPT to create your formulas as well.
I'll show that towards maybe the end of our sessions. Any questions, anyone? Can I go to the next example? Assuming no questions, I'll come to the next one. Okay. Now, those who don't have the latest version will have to do this on Excel online because आपको unique function use करना है. So basically, now creating a dependent list is a very important use case in any function that you work with. Okay. Can be HR, finance, marketing, whatever. Now, for example, here I have a HR kind of a data set where there is a job family or a function mapping, and there is a sub job family. Any operations के अंदर आएगा production. Just that filter and show you. So within one function, there might be multiple sub functions. In one function, there might be multiple sub functions. किसी में नहीं होंगे, किसी में होंगे. जहाँ नहीं होगा वहाँ सेम चीज आती है. जहाँ होंगे वहाँ वो स्पेसिफिक फंक्शंस को डिफाइन करें. वहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शंस को डिफाइन करें. नाउ a lot of times what happens is आपके पास डेटा होता है तो ये आपके MIS में होगा for your employees. Hence you have 1200 rows here. Now if I want to create a unique list, and then create a mapping, what I can simply do is सबसे पहले I can say I want a unique of both of these lists. Control backspace. And remember जब आप unique लिख रहे हो function, तो by default वो आपको unique values नहीं देता है. इसका default behavior is giving you distinct values. So I will have around 56 values here mapped against the correct sub function. Okay. So the function that I just used is called unique. Very simple formula. Remember unique का जो last argument है, second नहीं, last argument है जिसमें आप define कर सकते हो कि आपको return items that appear exactly once, which is absolutely unique. या दूसरा return every distinct item. By default, the behavior is it will take false. अगर आप define नहीं भी करोगे ये arguments, because ये non-mandatory arguments होती है. Because any argument that is inside a square bracket in a function is a non-mandatory argument, right? So even if you don't define these functions, the default behavior is going to be a false. Right? Now, once I have a unique list like this, and let's say मुझे job function के against में मुझे sub job family चाहिए, right? So I'll have to create a dependent list. For example, what I'll do now is rather than having a list for both the columns, I'll only create a unique list for my first column. Which is the job family. यहाँ पे then I can go ahead and create a data validation wherein I can say that my list is the unique list that I just created. So do it again. And go to list, source, second, list, source, push it down, and okay. यहाँ पे I get the list. Okay. Now against one function, against one job family or against one function, there might be multiple functions that might be appearing. So यहाँ पे what I have to do is I'll have to apply another function called filter. So I can say that I want to filter. Now filter function is like you specify conditions on a data set और वो जहाँ आपके rows match होंगे आपको output में वही rows मिलेंगे. So I can say that मुझे output में sub job family चाहिए, जहाँ पे my job family, which is this, is equal to the value over here. So when I choose, I'll have to do a h3 is equal to making array here. So my first argument is going to be I want the entire array. Then I want to include values where the job function, which is value in h3,
is equal to the value in B3. I want to freeze H3 here. Surplus function F4. Sorry, let me just check what error I'm making. So मुझे ये नहीं चलाना है सर ऐसा. My bad. So I want the output from column C where the value in H3 is equal to B3 and I want to apply a unique on top of it because मुझे unique list चाहिए. Because मुझे unique list चाहिए. So B3 to B1285. तो मुझे इस तरीके से यूनिक लिस्ट मिली. बिकॉज जब मैंने पहले यूनिक फंक्शन नहीं लगाया था तो मल्टीपल वैल्यूज रिपीट कर रहा था, वो मल्टीपल वैल्यूज रिपीट कर रहा था. तो अगर मैं यहाँ से यूनिक फंक्शन हटा दूंगा तो इट विल गिव मी अ लार्जर लिस्ट. गिव मी अ लार्जर लिस्ट मतलब एक आइटम मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा. मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग के केस में जो यूनिक आइटम्स चाहिए वो चाहिए. तो मुझे फिर से यहाँ पे यूनिक फंक्शन ओपन करना होगा. मुझे फिर से यहाँ पर यूनिक फंक्शन ओपन करना. सो इफ आई चूज अ स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे अगेंस्ट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन देयर इज नो सब फंक्शन बट सिंस देयर इज अ सब फंक्शन कॉलम उसमें मैपिंग करना जरूरी है. तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा. सिमिलरली इफ आई गो टू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में देयर आर मल्टीपल वैल्यूज. देयर इज केपेक्स, सिविल, डॉक्यूमेंटेशन. अगर हम एक वैल्यू को देखें जैसे सिविल है तो सिविल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है. and I what I've done is when I do a unique here, it only gives me a unique value. So when I go to engineering, तो वैल्यू एक ही बार रिपीट होगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होगा. ये पहले show you the formula. We break the formula into multiple lines. यहाँ पे अगर आप डॉलर साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा बिकॉज आप फॉर्मूला ड्रैग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका फॉर्मूला एक ही सेल में एग्जिस्ट करता है. तो इवन इफ यू डोंट अप्लाई डॉलर साइंस ऑन H3 it is going to be absolutely okay. What this formula is basically doing is I want to filter from this column. Okay, this is a condition. What is the condition that I'm applying? That the value in H3, wherever this value is equal to the value in column B, I want that as the output. When I do that, it gives me duplicate rows as well. So I just apply the unique function to filter that result. Larger, अगर आप देखोगे larger जो इसका result होगा उसमें if I press function F9 can show you intermediate calculations. So if I press function F9, you can see that जो result आ रहा है वो multiple times repeat हो रहा है. बट जैसे ही मैं यूनिक के साथ देखता हूँ तो मुझे यूनिक लिस्ट मिलेगी. मुझे यूनिक लिस्ट. So filter is creating a list for me. The filter function is creating a list for me. What I'm essentially doing is I'm supplying that created list from the filter function into the unique function. एक बार ये ट्राई कर लीजिए. इसका फॉर्मूला मैं यहाँ डाल देता हूँ. So that's easier for you all to see. This is an interesting example. So also I have to split formula. Mark the colors ताकि आपको पता चले कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे डिस्प्ले. Try this example everyone. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. इसमें कोई डाउट है तो पूछिए. कुछ भी ट्राई दिस एग्जांपल. और जिनके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं, ऑनलाइन पे कर लेना. ऑनलाइन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आप सिंपली excel.new पे जाके अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो. अकाउंट नहीं तो एक जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एंड यू कैन सिंपली अपलोड योर फाइल्स एंड वर्क ऑन एक्सेल ऑनलाइन. इट्स लाइक सिमिलर टू व्हाट गूगल शीट्स इज. You can try the example. If you having doubts or if you want me to repeat, if you want me to repeat it, let me know.
Great. Others, I'm assuming there are no questions, right? Again, once you're familiar with the function, filter function is not very complex. मैं आपको एक दिन डायनामिक अरेज भी करा दूंगा ताकि आपको जो नए नए फंक्शंस आए एक्सेल में उनका भी एक आइडिया लग जाए. Can give you a high level overview so you can have an awareness of that as well. Now you can close and save this file. Data validation में यही है. This is basically what data validation is. It is different use cases that you can think of, but generally you would want to create a dependent drop-down list, or you'd want to have a validation based on certain data types, or you would want a list. You would have specific rules, या फिर आपको dependent list चाहिए. अब dependent list में again आपके पास 2 लिस्ट हैं, 3 dependencies है, 4 dependencies है, that depends. Then you just keep increasing the level of complexity. But again, this is easier now with dynamic array functions. Earlier it would have been a little complex to do this. You would need to have an advanced level understanding of different Excel formulas. Now that we have unique and filtered with dynamic array functions, it is easier to do such kind of an example or such kind of a use case. You can close and save the file. मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लैंडमार्क के लिए किया था. तो लैंडमार्क में बेसिकली था क्या, दिस इज द आउटपुट दैट वी हैड क्रिएटेड फॉर देम. एक सिंपल एक्सेल रिपोर्ट है. तो जब यूजर कुछ सर्च करता है तो उसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखाता बेसिकली यूजर को यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखती है. डेटा वैलिडेशन है पर उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दिखती है. यूजर विल हैव टू सर्च फॉर अ वैल्यू, लेट्स से and then that value would pop up here. Yeah. So if I type whatever I type, it's like a wild character search that we do. जो भी मैं यहाँ टाइप करता हूँ मुझे वही दिखाता है, तो मुझे पूरा वैलिडेशन नहीं दिखाता. जो इसके लिए पहला एग्जांपल हमने बनाया था उसमें पूरा वैलिडेशन. तो अभी बेसिकली इनका डेटा था क्या, मैं आपको दिखाता हूँ. ये तो फाइनल आउटपुट आप देख रहे हो. डेटा था फाइल है. ये डेटा था बेसिकली. सो डेटा मैं आपको समझा देता हूँ क्या है. अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. लैंडमार्क इज अ वेरी लार्ज ग्रुप, तो उनका they have to rent out a lot of real estate. So they have different kinds of insurance that they take. तो 13-14 टाइप के इंश्योरेंस क्लॉजेस थे जो उन्होंने लिए थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय लैंडमार्क. नाउ उसमें देयर वर सर्टेन अदर पॉलिसी कोड्स दैट वर बीइंग एप्लीकेबल. से ये जो 1 2 3 4 है दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, उसका यहाँ पे एक मीनिंग है कि वो किस पॉलिसी कोड में फॉल करता है या एक इंश्योरेंस क्लॉज में कौन से पॉलिसी कोड अप्लाइड होते हैं. तो यहाँ पे उसका एक मैपिंग है 18 कोड्स का. नाउ दीज आर 2 सेपरेट टेबल्स. नाउ फॉर मी अगेन डेटा वैलिडेशन अगेन इज द लास्ट स्टेप. पहले आएगा डेटा क्लीनिंग. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ. आई शुड हैव दैट अवेलेबल विद मी. सो ये 2 सेपरेट टेबल्स हैं यहाँ पे. एक टेबल आपके पास ये है और एक टेबल आपके पास यहाँ पे राइट में है. व्हाट आई हैड डन वाज, I know we'll not be covering Power Query during the course of this entire workshop, but मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने इस स्पेसिफिक एग्जांपल में क्या किया है. This was a fairly simple example, but I'll just give you an overview. So what I had to do basically in Power Query was, सबसे पहले मैंने इस डेटा को एज इट इज लोड किया. जो आपने वहां देखा डेटा उसी तरीके से मैंने लोड किया. अब सिंस ये हर एक नंबर जो है इसका एक मीनिंग है, मतलब आई कैन मैप दिस नंबर टू अ स्पेसिफिक वैल्यू व्हिच इज अ टेक्स्ट वैल्यू व्हिच विल कम फ्रॉम अ डिफरेंट टेबल व्हिच इज इन अ डिफरेंट क्वेरी ओवर हियर. जैसे ये टेबल था तो मैंने इस टेबल को एज इट इज लोड कर दिया. तो जो ये 1 to 18 कोड्स हैं वो
उनका एक मीनिंग है by default, right? They have a meaning to it, assigned to that. So what I did was, once I got the data, original data इस तरीके से था, मैंने इन नंबर्स को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट किया, बिकॉज स्प्लिटिंग करना इजी था, बिकॉज द डिलिमिटर वाज अ कॉमा. जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज है वहां तक वो स्ट्रेच करेगा लास्ट कॉलम तक, जहाँ कम वैल्यूज होंगी वहां नल दिखाएगा, जहाँ कम वैल्यूज होंगी वहां नल दिखाएगा. मेरा ओरिजिनल डेटा वाज दिस, देन आई हैव टू स्प्लिट इट इनटू दिस. आफ्टर आई स्प्लिट, नाउ फॉर ईच लाइन आइटम एवरी कोड शुड बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. तो मुझे इनको कॉलम्स में नहीं रखना, मुझे रादर इनको रोज में रखना है, विच मीन्स इंश्योरेंस बाय अदर पार्टी के लिए मुझे एक कॉलम चाहिए. So I had to unpivot the data. So जैसे contract for supplier के against में there were multiple insurance codes that were mentioned या policy codes that were mentioned, तो मुझे उनको हर एक अलग अलग line item में repeat करना था, because I want to create a larger mapping table. फिर उसके बाद I did a simple VLOOKUP basically कि यहाँ पे जो कोड है, इस फाइल में जो कोड है और इस फाइल में जो कोड है, उसके अगेंस्ट में मैंने पॉलिसी नेम और सैम्पल फ्लॉस को आउटपुट निकाला. तो वंस आई डू दैट मर्ज, यहाँ पे उसको मर्ज बोलेंगे, बट इट्स लाइक अ VLOOKUP only. It's literally like a VLOOKUP. Then I will get the final output which looks like this. इसमें मेरे पास कोड है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, पॉलिसी कोड है, पॉलिसी नेम है और पॉलिसी कोड नेम और सैम्पल क्लॉज है. अब ये दोनों कॉलम सेम है, तो मैंने इनमें से एक कॉलम हटा दिया, एंड my final mapping table looked like this. Show you. This is what my final table looked like. This is what my final table looked like. इसमें जो मेरे पास जो separate tables थे, I had to first consolidate them into a single larger table. Then I had to create a separate sheet for data validation, क्योंकि मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को डेटा वैलिडेशन में सप्लाई करना था. तो पहले दे हैड दिस, आई हैड क्रिएटेड ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर इट. तो यहाँ से चूज करते थे और यहाँ पे उनकी वैल्यूज अपडेट हो जाती. यहाँ पे भी आप देखोगे एक सिंपल फिल्टर का फंक्शन लगा हुआ है अलॉन्ग विद एन इफ कंडीशन. ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू द पॉलिसी हियर फ्रॉम द अदर शीट, देन इट शुड डिस्प्ले द वैल्यूज, अदरवाइज इट शुड डिस्प्ले, अदरवाइज इट शुड नॉट डिस्प्ले एनीथिंग, अदरवाइज इट शुड नॉट डिस्प्ले एनीथिंग. दो फिल्टर कंडीशन लगी है इफ में, देयर इज अ वैल्यू ऑफ ट्रू एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ फॉल्स. So again, whatever functions you're using, the level of complexity is going to be different. Maybe I'll cover such case studies also if you guys are interested, rather than just focusing on the functions. एक larger data set लेके इसमें एक case study टाइप का, तो आपका पावर क्वेरी भी कवर हो जाएगा, थोड़ा सा आपका डेटा क्लीनिंग भी हो जाएगा, एक्सेल फंक्शन भी हो जाएंगे और डिफरेंट फीचर्स भी आपके हो जाएंगे. But I just wanted to give you an overview like this. ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेंटेन किया जाता है. डेटा इज नाउ थैंकफुली इफ समवन डिसाइडेड दैट वो सिर्फ कॉमास डालेंगे, कहीं कॉमा कहीं स्पेस नहीं डाला उन्होंने, वरना इट वुड हैव बीन मोर कॉम्प्लेक्स टू क्लीन दिस डेटा. अदरवाइज इट वुड हैव बीन मोर कॉम्प्लेक्स टू क्लीन दिस डेटा. So ये है, and this is the kind of use case that you would have for a data validation. Just wanted to give you that as an overview. Great. Any questions, anyone? Any questions, anyone? Anything that you'd like to ask? Anyone, any questions? Great. Questions then? We'll have questions later when we practice some more, sir. So we'll ask separately. Not an issue, not an issue. Acha, some of you have been messaging me separately. That is absolutely okay. I might not have replied to all of you. मेरा ना actually weekend पे भी classes चल रहा है इस month, so I have a very packed schedule. But जब भी time मिलेगा, I'll respond. So if I've missed your message, you can ping me separately again. But I'll definitely respond. Just wanted to share that. Google Sheets में you can do everything that you're doing in Excel, but Google Sheets is on the cloud, so there is a collaborative feature. But Excel exists in the Microsoft ecosystem. तो Excel use करना बहुत easy है because आपके पास Excel में Power Query है. Then you can migrate your data from Excel to Power BI very easily. You can have data modeling in Excel. All those features are not available in Google Sheets. Google Sheets का only, yeah, Excel is 100 times more powerful. Excel I have programming, which is VBA. Excel may I have Power Query, which is for data cleaning. Excel may I have Power Pivot, which is for data modeling. I don't have all that in. So Excel may I have VBA, Visual Basic. Then I have Power Pivot, which is creating models. Then I have Automate, which is TypeScript, again for automation.
Then I have Python now in Excel. So Excel is 100 times more powerful. And Google Sheets, I've seen a lot of organizations use it, but वो specific teams में होता है. Google Sheets में scalability नहीं है. Excel में जब आपको scale करना होता है तो आप Power Query move करते हो. फिर आपको जब और scale करना होता है तो eventually Power BI move करते हो. Google Sheets में there is no scalability. The only reason why I've seen people work is क्योंकि एक साथ दो लोग काम कर सकते हैं. That is the only reason why people work with Google Sheets. Okay. The fact that Google Sheets पे Excel के सारे functions available है does not make a lot of difference because जिनको function Excel में भी नहीं पता उनको तो Google Sheet में भी नहीं पता है. So I hope that answers your question, Musharraf. Great. Perfect. So like this we discussed, we'll meet again next time. I think next time we're covering condition formatting. In fact, I'll start with pivot tables. मैं उसी में condition formatting करा दूंगा. Condition formatting में separately एक lecture करने का there is no point. Pivot table के साथ ही आपको condition formatting करा दूंगा. Yeah, we'll start with VLOOKUPs. We'll see. Great then. Thank you everyone. I'll just stop the recording and meet in the next session.